Okay, students, see in the chapter Continuity and Differentiability of class 12th, we shall see some more examples or limits. Okay, see here, if f of x equal to greatest integer x plus greatest integer minus x, this is f of x, but when x is not equals to 2, and f of x equals to lambda when x equal to 2, and it's continuous at x equal to 2. This is given. The given function is continuous at x equal to 2. Then find the value of lambda. So question is, if this function is continuous at x equal to 2, then what should be the value of lambda that you have to find. Okay. So here we say that if the function is continuous, then the value of that function at x equal to 2 है ना, that should be equals to f of 2 है ना. So that is as function लिखते हैं हम here f of x equals to greatest integer x plus greatest integer minus x when x is not equals to 2 and equals to lambda when x equal to 2. Okay, we have this function as f of x is continuous function, continuous at x equal to 2, x equal to 2 के पास में continuous function है, therefore limit extending to 2 f of x की वैल्यू f of 2 के बराबर चाहिए है ना. That and then we can say that the given function is continuous function. So इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की सेम होना चाहिए. f of 2 के बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए. that is left hand limit that should be equals to f of 2 is lambda, that it should be equals to f of 2. right hand limit should also be equals to f of 2. so left hand limit निकालते हैं हम. लेफ्ट हैंड लिमिट at point 2 के पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट at point 2 के पास में. so limit extending to 2 from left hand side f of x function हमारा लेफ्ट हैंड साइड मीन्स if this is a real number line 2 is here, so लेफ्ट हैंड साइड इधर वाली हो जाएंगी, राइट हैंड साइड ये वाली हो जाएगी. दोनों लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में value of the function and the value of the function at point 2, this should coincide. Okay, so left hand side value should equals to f of 2. so that is f of x means limit extending to 2 from left hand side. ये फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x, that should be equal. what is f of 2? f of 2 is lambda, that is equals to lambda. okay, now this is from left hand side, so therefore limit extending to, I am taking this h tending to 0, subtract h from 2, so you will get a point 2 minus h here, 2 minus h, so that your x becomes 2 minus h. so that is equals to in bracket 2 minus h, okay, plus greatest integer a minus, then replace x by 2 minus h left hand side. okay, so equals to limit h tending to 0 2 minus h, 2 minus h. so what will be the value of 2 okay, we shall find out later on. 2 minus h plus this is minus and minus, that is plus h minus 2 plus h, ऐसा हो जाएगा है ना. so that is equals to limit h tending to 0 2 minus h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच से हमको लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर मिलता है ना. 2 माइनस से हमको लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर मिलता है, इट विल बी 1 मिलेगा. 2 माइनस एच 2 में जैसे 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 का आंसर 1 होता है लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर. सो 2 माइनस एच मीन्स 1, दिस विल बी 1
plus then -2 plus h, -2 plus h. सो -2 अगर यहाँ पर है उसमें प्लस h ऐड करो, प्लस h मीन्स इधर, सो दिस विल बी -2, यहाँ पे -1 होगा, राइट, हियर इट विल -2 -1, इसमें थोड़ा h ऐड करो तो क्या मिलेगा यहाँ पर आंसर, h ऐड किया तो -2 प्लस h, -2 प्लस है, जैसे कि -2 में प्लस 0.5 ऐड किया तो -1.5 मिलेगा आपको, h ऐड करो, है ना, -1.5, -1.5 इट कम्स हियर, सो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -2 होगा, सो दैट विल बी -2, ओके, h टेंडिंग टू 0, सो दैट विल बी 1 प्लस -2 दैट इज -1, है ना, सो ये मिलेगा आपको -1, therefore -1 इक्वल्स टू, दिस इज लैम्बडा, इक्वल्स टू लैम्बडा था हमारा, ये वैल्यू इक्वल्स टू लैम्बडा, सो therefore लैम्बडा शुड बी इक्वल्स टू -1, then and then only the function will be continuous. लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से एक ले लो, लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल्स टू f(2), है ना, वो तो होना ही है तभी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, राइट हैंड साइड दोनों होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू f(2), सो f(2) इज लैम्बडा, so lambda, this is left hand side limit, so left hand side limit gives us -1, a left hand limit, so -1 equals to lambda, therefore 1 lambda should be equals to -1, so the answer of this question is lambda equals to -1, okay. Then come to another question, determine f of 0 so that the function f of x defined by f of x equals to 4 raised to the power x minus 1 whole cube divided by sine x by 4 into log of 1 plus x square by 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो फॉर दिस क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to the power x minus 1 upon x equals to log of ये होता है basis e here, okay, one this formula you have to remember. Similarly second formula we learnt in class 11, that is limit x tending to 0 sin x upon x, that is also equals to 1, and third is limit x tending to 0 log of 1 plus x, log of 1 plus x upon this x also equals to 1. So these three formula you have to remember here. Okay, now let us solve this question. Determine f of 0, आपको f of 0 निकालना है, 0 के पास इसकी क्या वैल्यू है, what is f of 0, so that the function defined by b comes, यहाँ पे b comes becomes, this becomes continuous at x equal to 0. This is the question. If this function is continuous, at x equal to 0, 0 के पास में continuous है तो f of 0 क्या होगा, what should be the value of f of 0, as this function is continuous therefore limit x tending to 0 f of x की value this should be equals to f of 0, f of 0 के बराबर में होगी, right, तो यहाँ पर therefore limit x tending to 0, what is f of x, f of x is here of 4 raised to the power x minus 1 whole cube upon the sine x by 4 into log of 1 plus x square by 3, this is the function, this function is given,
Okay, now find the value of f of 0 here. F of 0 should be equals to limit extending to 0 f of x a इक्वल होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0. अभी मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब से ऊपर डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो. सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 आएगा ना आपका एफ ऑफ 0. ओके, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 ये हो जाएगा आपका. और लेट अस फाइंड आउट दिस. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4x minus 1 whole cube upon x cube divided by sin x by 4 into log of 1 plus x square by 3 divided by x cube. ऐसा डिवाइड करो. दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0. ओके, नाउ f of 0. Okay, therefore limit extending to 0, I am writing this x cube in this bracket, so it will be 4 raised to the power x minus 1 upon x whole cube, x cube है ना, right, in the bracket whole divided by ये जो x cube है उसमें का एक x यहाँ पर दे दो, साइन x बाय 4 अपॉन x एक यहाँ पर दे दो x क्यूब में का, और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3 एक एक्स स्क्वेयर यहाँ पर दे दो. चलेगा. दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम. सो अभी यहाँ पर तो साइन x बाय 4 है, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1. यहाँ x है तो यहाँ पे x है, यहाँ x बाय 4 है तो यहाँ मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ. इधर देखो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1. ये x यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 है तो मुझे एक्स स्क्वायर बाई 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 3 से. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0. देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 raised to the power x minus 1 upon x whole cube. I am taking separate limit. Okay, divide by limit extending to 0. ये 1 upon ये जो है 4 जो है इधर ले लो, 4 into sin x by 4 upon x by 4, right, into limit एक्सटेंडिंग टू 0. टेक द लिमिट ऑफ दिस. ये जो 3 है साइड में ले लो, ये वाला 3 ये 3 साइड में ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 3 लिखो वहाँ पर, है ना. सो सॉरी दिस ये जो 4 है इस डिनोमिनेटर में इसके, दिस विल 1 बाई 4. यहाँ पर होगा ये दिस टर्म है ना 1 बाई 3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ये हम 1 बाई 3 सामने ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 बाई 3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर बाई 3 इक्वल टू एफ ऑफ 0. ओके, सो नाउ वी गेट हियर, सी दिस इज 4 raised to the power x minus 1 upon x raised to the power 3. a raised to the power x minus 1 upon x, a raised to the power x minus 1 upon x, limit extending to 0, it is log of a. So value of this limit will be log of a to the base e raised to the power a cube है. ये टर्म जो है 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे. अपॉन यहाँ की कीमत 1 बाई 4 इंटू sin x by 4 upon x by 4, limit extending to 0, that will be 1 into 1 by 3. This log of 1 plus x upon x, that is equals to 1. So ax यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे x square by 3 x square by 3 है. So value of this function also going to be equals to 1, that is equals to f of 0. Okay, so therefore
this 4 into 3, that is 12. 1 upon 12 goes to the numerator. 12 into log of this is, I think, 4 na 4. Instead of a we have taken 4 raised to the power x. So log of 4 to the base e whole cube divided by this 1 by 4, 1 by 3 goes to the numerator, that will be 12. So this is equals to f of 0. So therefore student, this is the correct answer of this question. Okay, 12 into log of 4 to the base e whole cube. So f of 0 is this value. Okay students. Okay, thank you.